ये दिख नहीं रहा है। Good afternoon, everyone. Welcome you all. Yes, we can. Good afternoon, everyone. Okay, so I hope that you have revised yesterday's lesson, and I know I've given you the questions, so there are many, so I don't expect that you complete it by day, but within a day or two you finish it up, and then among you only will be solving the doubts. And then I hope yesterday's topic was clear to you. Today we are going to deal with a very important topic which comes as 3 marks or 4 marks in class 10th board exam. That is division of polynomials. Good. Yes, good that you have revised. When only 14, some problem with the internet continuously over. Okay, we can begin with the session. I'm starting with a polynomial, a trinomial, and I'm taking only one, that is a linear one, a single one as a divisor. Okay, a very simple concept I'm taking, so pay attention please. So I'm taking it x, a linear polynomial, okay, and I'm taking it here as x squared plus 3x minus 2. Okay, so when we divide it, now when you have to do the division, so there are two terms required. That is, one is divisor and the second is dividend, to which the number which we have divided. So dividend is a number which is getting divided, and divisor is a number with which we divide the dividend. Okay. So when you dealt with the numbers, you had the tables with you. So using the table, you used to do the division. Now when it is with the polynomials, we don't have any tables with us, so we have to find out by which number or by which term we would multiply so that we go ahead with the steps. And what is the basic step in division? When you dealt with numbers, what you used to do it? You will select a digit which are greater than your divisor, okay, and then you go with the table of the divisor, and you go and select the term which is nearly equal to or bit lesser than the dividend term, and then you subtract that, whatever answer you get it, along with the next digit or maybe group of digits, you bring it down, and again you get some group of digit, again you use the table and then subtraction, right? So the similar concept we are going to follow it here also. Okay, just see how to do it. बहुत ही सिंपल वाला लिया है यहाँ पे, डिवाइड बाय x. तो यहाँ पे हमें चाहिए x square और x. So I really request you students that you follow the working column. I know कि working column की कोई marks नहीं होते हैं, but that would help you to be perfect and to avoid any errors. क्योंकि मैंने बहुत को देखा है कि like they are confident that yes they can do it, but during the exam they make some minor mistake, and because of that in hurry they make mistakes. So I request you, I will suggest you that you go with the working column. तो जैसे हमारी पहली वाली टर्म है यहाँ पे x square, ओके, तो हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, जो भी हमारा डिविडेंड होगा उसकी जो फर्स्ट टर्म, अब यहाँ पे ऑब्वियसली एक ही टर्म है, बट इट कुड हैव कि डिवाइजर में भी एक से ज्यादा टर्म हो सकती है. ओके, तो x स्क्वायर से हम x को डिवाइड करेंगे यहाँ पे डिवीजन, सो व्हाट आई गेट x. इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो क्वोशिएंट है वो क्या होगा, x. आई होप यू आर विद मी. Okay, are you getting it? So I divided. So you know that when I multiplied, I get x squared. Only one term, यहाँ पे एक term होगी.
अब क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्शन, सो आई गेट 0. ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म नीचे आएगी आपकी, सो 3x. अब हमें चाहिए 3x. यस, आई थिंक मेनी ऑफ यू आर जॉइनिंग इट. गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड प्लीज कंटिन्यू हियर. सो 3x, फिर से मैं इसका फर्स्ट टर्म यहाँ पे जो भी अपना फर्स्ट टर्म होगा, मतलब जो भी डिवाइजर का फर्स्ट टर्म होगा, यहाँ पे सिंगल टर्म है तो x, और उससे डिवाइड करके हम देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, तो 3. ओके, तो वो 3 का साइन कौन सा है, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, कोई भी साइन नहीं है, उसका मतलब है कि वो प्लस है. ओके, सो 3x, तो हमें मिल गया 3x, और अब नीचे मिलेगा -2. व्हाट अबाउट दिस, नाउ व्हाट फर्दर. ओके, नाउ आपने डिवीजन में सीखा है, जब आप नंबर्स के साथ डिवीजन करते हो, सिंपल नंबर्स के साथ, तो जैसे कि हमें यहाँ पे नंबर ले लिया से 256, और मैंने इसको डिवाइड कर दिया 7 से. ओके, तो मैंने 7 से डिवाइड किया था, तो 7 3 का 21. ओके, देन 46, देन 7 6 का 42. ओके, और फिर क्या मिला मुझे 4. तो ये जो 4 है, ओके, वो 7 से छोटा है, तो वी कांट फर्दर गो विद द डिवीजन एंड एंड ऑफ द डिवीजन हियर. उसी तरीके से जब पॉलिनोमियल्स की बात आती है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर पाएंगे कंटिन्यू. सो द आंसर इज नो. दिस इज आवर रिमाइंडर. सो व्हाट इज आवर रिमाइंडर हियर, -2. हम इससे आगे नहीं जा सकते. ओके, लेट्स सी द रीजन व्हाई. अभी मैं कोई जनरलाइजेशन नहीं कर रही, अब ये सेम मैं डिवीजन ले रही हूँ. ओके, इसमें मैं थोड़ी सी माइनर चेंजेस के साथ डिवीजन ले रही हूँ. सेम सिंगल टर्म ही है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है. डोंट गेट रेस्टेड, डोंट गेट बोर्ड अप, ट्राई टू ऑब्जर्व व्हाट आई एम डूइंग हियर. ओके, यहाँ तक मैं x स्क्वायर, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म है x क्यूब, तो x क्यूब और x स्क्वायर, इसका मतलब आपको ये हुआ कि हम x से मल्टीप्लाई करेंगे. सो x स्क्वायर इनटू x क्यूब, सो ये हो गया x क्यूब. 0, 5x स्क्वायर, फिर से हम 5x स्क्वायर और x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, सो वी गेट इट 5. नो साइन, दैट मींस इट्स अ प्लस साइन. सो 5x स्क्वायर, फिर सब्ट्रैक्शन होगा. ओके, अब क्या बचा नीचे, -7x, और ये बचा है +6. आगे कर सकते हैं यहाँ पे. ओके, यहाँ पे आगे डिवीजन बढ़ेगा नहीं. क्यों नहीं बढ़ेगा, बिकॉज, तो जैसे वहां पे हमें पता चल जाता है कि नंबर छोटा है, सो वी कांट मूव फर्दर विद द डिवीजन. उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या देखेंगे, डिग्री. ओके, डिग्री ऑफ डिवाइजर, डिग्री ऑफ डिवाइजर शुड बी, क्या है 1 है, यहाँ पे डिग्री क्या है 2 है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिवाइजर है वो इसकी जो रिमाइंडर की डिग्री से ज्यादा है. सो वी कांट गो फर्दर विद द डिवीजन. ओके, तो आपका डिवीजन स्टॉप हो जाएगा जब आपकी डिवाइजर की जो डिग्री है वो रिमाइंडर की डिग्री से ज्यादा हो जाएगी. सो द डिवीजन स्टॉप्स देयर. ओके, सो दिस पार्ट अबाउट व्हाट यू कॉल दिस एज क्वोशिएंट, और ये आपका होगा रिमाइंडर. अब ये तो आपको बड़ा आसान लगेगा क्योंकि मैंने बहुत से सिंपल कॉन्सेप्ट लिया है, राइट. बट एक्चुअली जो आपके एग्जाम में जो आते हैं क्वेश्चन, इट इज रिलेटेड टू बाइनोमियल डिवीजन. ठीक है, एक्चुअल डिवीजन मेथड, जिसको इसको कहेंगे हम एक्चुअल डिवीजन मेथड, और ये भी फैक्टराइजेशन के लिए यूज होता है. ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग द बेसिक स्टेप्स ऑफ डिवीजन. इज इट क्लियर एवरीवन? एंड आई थिंक थोड़ा सा वॉइस क्लैरिटी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आई थिंक यू कैन यूज द ईयरफोन्स because यहाँ से it's quite clear. Okay, so due to some range issues, if you have some problems, then I think that would be a better suggestion that you go ahead with your earphones. Okay, I hope it is clear. Okay, fine. Okay, now we are going with a binomial. तो आपको एक चीज जो मैंने ये बेसिक से क्या समझाया कि हमें क्वोशिएंट के लिए करना क्या है, मतलब ये वर्किंग कॉलम, बेसिकली आपका वर्किंग कॉलम यहाँ पे बहुत जरूरी है. So I suggest you that please make the habit that you make a working column, so it doesn't carry any marks. Okay? और जो basically हमारा जो question जो start हो रहा है exam के लिए, it comes like factorization, या तो divide, या तो जैसे question आता है कि what should be added to the polynomial, या what should be subtracted. We'll see the question later.
फर्स्ट यहाँ पे आप देख लीजिए डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे होता है. So we'll go with the binomial as a divisor. I'm taking the same dividend and the divisor here is x minus 2. So what the rule says, what I told you, okay, what I told you, इसका first term और इसका first term, ठीक है, तो x cube और यहाँ पे क्या है फर्स्ट टर्म x, तो आप जब कट करेंगे तो आपको आ जाएगा x स्क्वायर. ओके, तो हमारा क्वोशिएंट है x स्क्वायर. ओके, एक चीज ध्यान रखिए, अब हम यहाँ पे बाइनोमियल के साथ डील कर रहे हैं तो नेचुरली एक साथ दो टर्म्स साथ में आएंगे. ओके, तो यानी कि x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और यहाँ पे -2 भी है तो -2 इंटू एक्स स्क्वायर, सो -2 एक्स स्क्वायर. ओके, इज इट क्लियर? एंड नाउ वेल डू सबट्रैक्शन. सबट्रैक्शन का मतलब होता है पॉलीनोमियल्स में यू नो दैट चेंजिंग द साइन. ओके, तो यहाँ पे ये प्लस है तो ये हो गया माइनस और ये माइनस है तो ये हो गया plus. Okay, so x cube minus x cube will get cancelled. 5x square plus 2x square. You go for the final sign. So it is 7x square. Okay, तो अब हमारे पास है 7x square. हमने दिया x यहाँ पे तो हम लेंगे क्वोशिएंट हमें मिल रहा है 7x. मिल गया हमें plus 7x. So 7x square. So we have two terms. Okay, so 7x से जो multiply करेंगे 7x minus 2, 7 ज्यादा है 14x. तो यहाँ पे इस -7 को भी मैं नीचे लाऊंगी, ये सबट्रैक्शन कैंसिल, ये प्लस, तो 14x minus 7 तो ये बन गया प्लस 7x प्लस 6. ओके, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, प्लीज ट्राई टू पे अटेंशन. ओके, सो यहाँ पे अभी हमारा 7x है, x है, so it get cancelled and we get 7. Okay, 7 into x, 7x minus 14. This is subtraction. Okay, so ये cancel हो गया और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर मिल रहा है 20. Okay, so what is the quotient here? And what is the remainder here? 20. I hope it's clear to all of you. Okay, so now I'm writing a question to you. आप लोग पहले try कीजिए, then I'll stamp it later. Okay, so everyone please copy down the question. चलिए, I want you to try this. Take your time, right? Try to do the sums properly with all the steps properly. Try it. कोई स्टेप में डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं. Anyone, any doubts? Or you're trying it? Good. Yes, correct. Very good. And what's the quotient? Yes.
Yeah, Aditya is the one I think who has got the answer. Anyone else? Yes, very true, Samar. Very good. Okay, verify your steps. So you could say here we got minus 2x. So we multiply by minus 2x. Here, this minus sign will be carried here. So minus 2x, it will become minus 2x square. And minus 1, minus 2. So it becomes plus 2x. Changing the sign, 3x minus 2x, x minus 1. So you can make this out as 1. So plus 1. So x minus 1 minus and plus all get cancelled and we get remainder as 0 and quotient as x square minus 2x plus 1. Okay. A third x square minus 2x minus x. बच्चा minus x कैसे आया? वेरिएबल रिपीट नहीं होंगे, नेक्स्ट टर्म जो आएगी उसकी. अथर्व check it. Yeah, Asta, I think you also got the correct answer. अथर्व रिमाइंडर 0 है बच्चा, पर आपने क्वेश्चन में कुछ गलती की है. यस दीप्ति यादव, who's it? Correct, आपका भी है वो. रिमाइंडर 0. ओके, अनन्या कुमारी जो भी है, मतलब रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, पर आपका क्वेश्चन भी साथ में चेक करना जरूरी है. ओके, इट्स ओके इफ यू डोंट टाइप इट, दैट्स फाइन. ओके, बट प्लीज चेक द सम. आर यू गेटिंग द सेम? अच्छा, अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है. हमारा रिमाइंडर 0 है, तो कुछ और आप कंक्लूजन या कोई कमेंट दे सकते हैं इसके लिए? जो भी हमारा डिविडेंड और डिवाइजर है, क्या उसके लिए आप कोई और कमेंट कर सकते हैं? कैन यू फाइंड सम रिलेशन बिटवीन दैट? Very good. Very good, Asta Janvi. You're very right. X minus 1 is a factor because from factor theorem we can say that since the remainder is 0, x minus 1 is a factor of given polynomial. Okay, children. So may I take this as a conclusion that you understood how to do the actual division of polynomial? Yes, everyone? बच्चा, you said that by splitting the middle term of the quotient, वो तो बात की बात है. पहले हम यहाँ पे ही बोल रहे थे, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है. रिमाइंडर 0 आ रहा है कब? जब हम इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे ये x माइनस 1 जो है वो इसका फैक्टर है. बाद में आगे चल के जो फैक्टर्स आएंगे वो तो है, पर साथ में यहाँ से सब इतना डिविजन करने पे वी कैन से दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर, राइट? बट व्हेन आई से 3 डिवाइड्स 27, यहाँ पे क्या मतलब होगा कि जो 3 है वो 27 का फैक्टर है, क्योंकि वो रिमाइंडर 0 देगा. जब आप 27 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है. सो इट इज अ फैक्टर. या वेरी ट्रू. ओके, नाउ वी आर गोइंग सिमिलर क्वेश्चन बट complex kind of question. So pay attention please.
The question is what should be added to this polynomial yx minus 2 such that x minus 2 is a factor of it. ठीक है, तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं what should be added और what should be subtracted. ओके, इसका मतलब आपको कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, आपको सिंपल डिवीजन सम है ये. सो प्लीज स्टार्ट विद द डिवीजन. ओके, और ओनली जो इसमें जो डिफरेंस है वो आपको आंसर को अलग तरीके से लिखना है. ओके, सो प्लीज स्टार्ट विद द डिवीजन, ट्राई इट. ओके, हम सेम मेथड करेंगे डिवीजन ऑफ पॉलीनोमियल जो हमने अभी सीखा वही इसमें फॉलो होगा. चलिए डिवीजन करिए प्लीज. Okay, so you are getting the remainder as well. Okay, let's try it. So when you solve this, you know the working column chart. Okay, so x and 3x cubed multiplied by 3x square, we get this as 3x cubed minus 6x square, subtraction 2x square minus 7x, again multiply by 2x square to x, we get this as 2x. So 2x square minus 4x minus and plus minus 3x plus 8. Okay, so multiplying by minus 3x, x minus 3. Okay, so minus 3x. Minus minus 2 plus 6 plus minus this remainder is 2. Now the question is what should be added? See, you are right, but you are wrong in writing the answer. Okay, now the question was what should be added so that x minus 2 is a factor. तो हमें फैक्टर बनाना है x minus 2, मतलब हमें रिमाइंडर क्या चाहिए? नहीं, मैंने सब्ट्रैक्शन वाला पूछा ही नहीं है. क्वेश्चन है हमारा व्हाट शुड बी एडेड, तो हमें जो नंबर देना है वो ऐसा नंबर देना है ताकि वो रिमाइंडर को 2 बना सके. तो हमें रिमाइंडर यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ 2 है, तो हमें उसको रिमाइंडर को क्या बनाना है? माय क्वेश्चन इज रिमाइंडर हमारा क्या होना चाहिए सो दैट वी गेट x minus 2 इज अ फैक्टर. कैन यू टेल मी द आंसर? हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या होना चाहिए so that we get it is a factor 0, isn't it? तो जीरो फैक्टर बनाने के लिए आई मीन टू से उसको जीरो बनाने के लिए हमें उसका ऑपोजिट नंबर ऐड करना पड़ेगा. मतलब कि यदि मैं इसमें -2 ऐड करूं तो ये बन गया यहाँ पे 6, isn't it? और ये जब तो मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगा. तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है जब आपका क्वेश्चन आता है व्हाट शुड बी एडेड, तो जो आपका रिमाइंडर आता है उसको ऑपोजिट साइन के साथ लिखेंगे कि दिस नीड्स टू बी एडेड. आई होप यू गॉट दिस.
So what is the answer? Be careful. जब भी आपका क्वेश्चन है what should be added, उसका मतलब है जो भी आंसर आया आपका रिमाइंडर 2 आया, so therefore -2 should be added to x. I hope you got this. Yes everyone. And यदि आपका क्वेश्चन ऐसे आता है, यदि ये सेम क्वेश्चन पूछा था then what should be subtracted, तो जो आपका रिमाइंडर है वो ही आपका आंसर होगा, that is 2 should be subtracted. I hope you are clear with this what I said. I discussed with you with two types of question, what should be subtracted और what should be added. तो जब what should be subtracted आ रहा है तो आप सेम आपका जो रिमाइंडर है वही आपका आंसर है, and what should be added तो जो आपका रिमाइंडर है वो ऑपोजिट वाला है. जानवी मैं वही बता रही हूँ बेटा, हमारे पास दो केसेस है. क्वेश्चन एक पूछेंगे कि व्हाट शुड बी एडेड टू गेट दिस एज अ फैक्टर, एंड दूसरा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट दिस एज अ फैक्टर. तो जब व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड आता है तो आपके पास क्या -2, तो वो बन गया 6 और 6 बनता तो ये हमें यहाँ 0 मिलता. ओके, पर जब मैंने कहा कि व्हाट शुड बी एडेड, ओके, तो आप 2 ऐड करोगे तो यहाँ 10 बन जाएगा, तो आपका रिमाइंडर 4 आएगा. दैट विल नॉट हेल्प यू. तो जब व्हाट शुड बी एडेड होता है तो जो आपका रिमाइंडर है उसकी ऑपोजिट साइन के साथ वही आंसर आपको लिखना है. आई होप आई एम क्लियर जानवी एंड अदर्स. आई होप यू गॉट दिस. इज इट क्लियर टू एवरीवन? जैसे कि सपोज हमारा नंबर यहाँ पे ये जो डिवीजन है, सपोज ये +8 की जगह पे मैंने इसको चेंज कर दिया -8. ठीक है, तो यहाँ -8 होता. ओके, तो यहाँ हमारा आंसर क्या था? -+6. ओके, और ये माइनस है, ये माइनस है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या था? -14. तो मैं क्या लिखती हूँ यहाँ पे? व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो -14 शुड बी सब्ट्रैक्टेड. तो देखिए ये क्या है? -14, और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ -14, तो ये ऑपोजिट हो गया और ये कट होकर 0 बन जाता है, isn't it? तो उसी तरीके से जो भी नंबर हमारे पास आता है, ओके, जो भी नंबर, जो भी आंसर हमारे पास, जो भी टर्मिनोलॉजी आती है, तो उसका ऑपोजिट साइन के साथ वो हमारा आंसर होगा. आई होप इट्स क्लियर. Okay? Okay. Now let's take down one most important question which comes in the board exam very frequently. Okay? Who is this? Asta. Asta, क्या problem है बच्चा? I think you're Asta. Asta, what's the trouble? अरे बाबा. Yeah, we will be solving it. Don't worry. I'm giving you the question, but similar one. But हम थोड़ा सा इसमें add on करेंगे. We can't go on solving the same sum, right? तो हम division वाला question लेंगे, जरूर लेंगे. Okay. Again, I'm clearing your doubt. Why opposite sign? तो जैसे कि मुझे आंसर 2 मिल रहा है, मुझे उसको 0 बनाना है, तो मैं 2 में क्या ऐड करूंगी तो मुझे 0 मिलेगा? यस, कुड यू गिव मी द आंसर? आप 2 में क्या ऐड करेंगे तो आपको 0 मिलेगा? कब 0 मिलेगा? -2 + 2. वही तो कह रही थी कि हमें 2 मिल रहा है तो उसकी नेगेटिव साइन के साथ जब हम ऐड करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा. दैट्स ऑल. क्लियर? यस. सो आई होप इट इज क्लियर नाउ. द कांसेप्ट इज क्लियर. ओके, एडिंग में हमें नेगेटिव साइन लेनी है. ओके, सो वन मोर क्वेश्चन. यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से है. मेथड सेम, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स ओनली. ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. मुझे पता है इसका ऑप्शन है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, बट जब बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो ये इस तरीके से आता है दैट यूजिंग एक्चुअल डिवीजन, मतलब वहां पे आप रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम या दूसरी मेथड, जैसे कि एक मेथड है सिंथेटिक डिवीजन, ओके, व्हिच कम्स इन द स्टेट बोर्ड बुक. आपकी बहुत सारी रेफरेंस बुक में भी आपको मेथड मिल जाएगी. क्वाइट इजी. पर वो कब कर सकते हैं? जब इन्होंने एग्जाम में यानी कि क्वेश्चन में जब आपको मेथड स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब वो ऐसे कहे आपको कि यूजिंग द एक्चुअल डिवीजन, सो दिस इज द ओनली मेथड वी कुड यूज. ओके, सो यू डोंट हैव एनी चॉइस, you need to learn these sums. Okay, so let's take down one more question.
It is, the polynomial is x raised to 4 minus 13x square minus 24x minus 36. Okay, please copy it down. Okay, now it's given that x minus 2 and x plus 2 are zeros of given px. Find other zeros. ठीक है, हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि सॉरी x माइनस I'm sorry, minus 2 and 2 are zeros of given polynomial. We have to find out other zeros. I hope it's clear to you. Polynomial सबको दिखाई दे रहा है. It is x raised to 4 minus 13x square minus 24x minus 36. Okay, and दिया हुआ है हमें minus 2 and 2 other zeros. हमें बाकी के दो zeros ढूंढने. बाकी के दो zeros मैंने कैसे बताया? So you could see the degrees 4. Degrees 4 मतलब कि maximum number of zeros यहाँ पे कितने आ सकते हैं? दो और आ सकते हैं. That is maximum number of zeros are 4 here. 2 are already given, so we can get 2 more. I'm just trying the possibility that we could get 2 more. Maximum 4 इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे. So we'll go with the same division because यहाँ पे generally specify होता है using actual division method. Okay? तो पहला आपका statement क्या होगा? अच्छा, जैसा कि मैंने बता दिया कि यहाँ पे division करना है. तो ये नहीं है कि बस आप लोग शुरू हो गए. I want you to write down the statements also. तो हमारा solution यहाँ से start होगा. Okay. Okay, minus 2 and 2 other zeros of given polynomial. Therefore, x minus 2 and x plus 2 are factors of x. Do you understand this? I think all of you are clear. जब 0 है minus 2 and 2, that means they are opposite side. मतलब x plus 2 and x minus 2 are the factors. Okay. और जब दो नंबर, जैसे कि मैं कहूँ कि 2 is a factor of a given number, 3 is a factor of given number, इसका मतलब 2 3 are 6 is also a factor of a given number. तो इस लॉजिक के साथ x minus 2 and x plus 2 are factors. इसका मतलब जो इसकी प्रोडक्ट है वो भी फैक्टर होगी पॉलिनोमियल. and therefore x minus 2 into x plus 2 यानी कि क्या होता है? I hope it's clear. Yes, everyone. ठीक है. आप लोग रिटर्न वर्क पे ज्यादा फोकस मत करिए फिलहाल. I'll show you this. I'll give you this. Okay, in the return work in the form of notes. First, try to understand. So be with me and just reply me whether you're getting it or not. Okay, and now we start with actual division. So जब हम division start करेंगे, I might require more space. So let's see if I can accommodate here. अब आपने देखा यहाँ पे x raised to 4 है, उसके बाद डायरेक्ट x square है. इसका मतलब कि यहाँ पे क्यूब वाली टर्म मिसिंग है. Okay, so when you do actual division, आपको थोड़ा सा ये वर्क करना पड़ेगा. You write here in decreasing order. जैसे मैंने ये उल्टा सुलट भी दिया होगा कि पहले x दिया है, फिर x में, तो हमें पहले तो उसको अरेंज करना है. Always remember when you are doing the actual division, आपको उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. दैट इज हाईएस्ट पार्ट विद उससे लोअर सो ऑन. तो यहाँ पे मेरी x क्यूब वाली टर्म मिसिंग है, तो मैं इसको खुद से ही लिखूंगी. ओके, प्लीज रिमेंबर इट व्हेन यू आर डूइंग द डिविजन. मैं लेती हूँ नंबर 24. ओके, सो यू नो 2 is a factor, 3 is a factor,
So that means 2 3s are 6 is always a factor of 24. उसी तरीके से कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सपोज 75 3 is a factor of 75, 5 is a factor of 75, it means 15 is also a factor of 75. I hope this is what you're getting it. मैंने थर्ड जीरो नहीं कहा है बच्चा, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिमेनिंग फैक्टर्स. ये थर्ड जीरो नहीं है, हम फाइंड करने वाले हैं. ये तो फैक्टर है सिर्फ उसका, ये जीरो नहीं है उसका. x square minus 4 cannot give you zero, it's not a zero, it's a factor. I hope it's clear. And 0 x cube मतलब हाँ मैंने ये ऐड किया है, because you know 0 into something is 0, so it will not change my question. I hope John it's further. Okay. So now x square minus 4. I'm not making the working column here because the space is the lesser. So यहाँ पे x square और x square से हम multiply करेंगे. So x square into x square, x raised to 4 minus 4 into x square. Minus 4 into x square यहाँ पे आ गया direct minus 4x square. Cancel. So minus 9x square. Okay. So minus 9x square मतलब मुझे minus 9 से multiply करना है. Okay. So when I go with minus 9x square, okay. Sorry, I think I need to make one more change. Okay, I'll change my question a bit. मुझे ऐसा क्वेश्चन चाहिए जो मेरा आंसर भी आए. Okay. So minus 36 minus into minus, it becomes positive here. Okay, so minus into minus positive. Sorry, I'm just changing the question a bit. Today, even because of some bad health, I couldn't prepare myself properly. So please, there is some change in the question. Please be here. Okay, तो यहाँ पे ये साइन चेंज की मैंने कैंसिल, साइन चेंज की कैंसिल, और ये मुझे क्या मिल गया यहाँ पे 0. I hope that is clear to you. Sorry, I just made bit change in the question. Okay, can you see the division? Quite simple. बहुत सिंपल सा मैंने सम किया है यहाँ पे. सिर्फ आपको स्टेप्स अंडरस्टैंड करना है. I know all of you understood how to do the division. Okay, अब ये डिविजन का क्वेश्चन आपको किस अलग अलग फॉर्म में पूछा जा सकता है. जैसे कि सिंपल डिविजन में आप क्वोशिएंट फाइंड करिए, रिमाइंडर फाइंड करिए. दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड वेदर इट इज अ फैक्टर और नॉट, वो भी पूछ सकते हैं. ओके, तीसरा है जो ये हमने लिया, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, जो आता है कि फाइंड अदर जीरोस. ठीक है, तो अब हमें ये रिमाइंडर क्या मिल गया 0. अब आपने एक छोटी क्लास में दूसरा का भी एक सीखा था. आई विल गो बैक टू द नंबर अगेन. जैसे कि मैं यहाँ लिखती हूँ 25 डिवाइड बाय 3. ओके, तो तुम आप कैसे करोगे? 3 8 are 24. ओके, so you remember something like this. So 25 could be written as 3 into 8 plus 1. You remember this? क्या कहते थे आप इसको? Writing the dividend in the form of divisor and quotient and the remainder. So what is dividend is equal to basically divisor into quotient plus remainder. तो मैं यहाँ पे उसको लिखूंगी, मुझे बाकी के दो जीरोस फाइंड करना है. तो पहले मुझे फैक्टराइज करना पड़ेगा. So my px would be equal to dividend is equal to divisor. क्या था divisor? x square minus 4 into quotient. क्या था quotient अपना यहाँ पे? x square minus 9 प्लस 0. ठीक है, अब ये जो हमारा क्वोशिएंट आया है x स्क्वायर माइनस 9, क्या आप इसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो? आई मीन फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो x स्क्वायर माइनस 9 को. ओके, एंड यू नो दैट अ वेरी सिंपल वन. x स्क्वायर माइनस 9 क्या होता है? इट इज x प्लस 3 into x माइनस 3. और जब x प्लस 3 और x माइनस 3 फैक्टर है, मतलब जीरोस क्या है उसके नेगेटिव साइंस के साथ, इसका मतलब ये हुआ कि x plus 3 is 0, यानी कि minus 3, और x minus 3 is 0, यानी कि 3. That means 3 and minus 3, x plus 3 is 0, minus 3 and 3 are other zeros. Understood? Okay. क्योंकि यहाँ पे हमने सारे फैक्टराइज कर दिए, जैसे कि x plus 2, x minus 2, या आपका x plus 3, या आपका x minus 3,
आपके अल्टीमेटली जीरो क्या होगा, -2, 2, -3, 3। तो बाकी के कौन से दो जीरोस हुए, -3 एंड 3। आई होप इट्स क्लियर टू यू. So I'm just repeating till that time you can reply whether you understood or not. इस क्वेश्चन में आपके स्टेप्स क्या होंगे. अगेन ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा. फाइंड द रिमेनिंग जीरोस या फाइंड द अदर टू जीरोस या फाइंड ऑल द जीरोस. कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, आपको दो जीरोस दिए होंगे, आप उसको एक्स के फॉर्म में यानी कि वेरिएबल के फॉर्म में डालेंगे तो वो बन जाएगा फैक्टर. फिर दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे और आप कहोगे कि उसकी प्रोडक्ट भी फैक्टर है. ओके, उसके बाद आप उससे एक्चुअल डिवीजन करोगे. आपका डिवीजन ये फैक्टर है इसलिए आपका डिवीजन में रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा, ये आपको याद रखना. ओके, और उसके बाद जो आपका क्वोशिएंट आया उसको आप फर्दर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या जो भी आपकी फॉर्मूलाज है उससे आप फैक्टराइज करोगे तो आपको और सिंपल मतलब कि लीनियर में फैक्टर्स मिल जाएंगे. और जब आपको लीनियर में फैक्टर मिला तो आप उसको इक्वल टू जीरो करके कहोगे कि yes these are the zeros. This comes as a 4 mark test question. ओके, इसका जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ये आता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिया -2 एंड 2 आर द जीरोस. ओके, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, मेथड सेम है, सिर्फ आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ मैं बता रही हूँ कि कैसे वर्क करना है. ओके, इफ एंड देन आई एंड अप माय सेशन. ओके, अब जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल सा लिया था दैट -2 एंड 2 आर द जीरोस. इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या आ सकता है, दैट √2 एंड -√2 आर जीरोस. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 एंड -√2 सेम, x -√2 x प्लस √2. ठीक है, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट, तो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, तो यू हैव टू बी केयरफुल फॉर मल्टीप्लिकेशन. दिस इज a minus b a plus b. तो फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर -2. अब यहाँ आप गलती से 4 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा. इसी तरीके से और कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म इसका क्या हो सकता है, जैसे वो आपको कहेंगे √3 + 2 एंड √3 - 2 आर द जीरोस. अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना. ठीक है, ये आपका क्लास 9 का रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन. ये दोनों जीरोस है मतलब कि ये फैक्टर है x -√3 + 2. इसको इस तरीके से लिखते हैं. ओके, इनटू x प्लस √3 - 2. ओके, तो अब इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, x minus √3 minus 2 x minus plus √3 minus 2. ओके, तो अब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूंगी. तो यहाँ पे यही एक कॉम्प्लेक्स है, बाकी डिवीजन आपको समझ में आ चुका है. सबसे ज्यादा जो आई थिंक 2019 में आया हुआ था जो आपका बुक का ही क्वेश्चन था जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था दैट √3 + 2 and √3 - 2 are zeros. तो आपको एक्चुअल डिवीजन से बाकी के रूट्स फाइंड करने थे. तो जैसे ये वाला है तो x मतलब कि ये दोनों जीरोस हैं तो ये उसके फैक्टर्स हैं और इट मींस इनकी प्रोडक्ट भी फैक्टर है. तो फिर उसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करूंगी. लुक एट दिस, x -2 दोनों की साइन सेम रह रही है दोनों में, तो x -2 minus √3 x -2 plus √3. तो ये पूरा मेरा a बन गया, ये b बन गया. तो देख रहे हो a minus b a plus b यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि x -2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर -4x प्लस 4 माइनस 3. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा x स्क्वायर -4x प्लस 1 इज अ फैक्टर. और फिर आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा उसको आप इससे डिवाइड करोगे. आई नो बिट कॉम्प्लेक्स बट ये आपने किया हुआ है 9th क्लास में, आपने ये इरेशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है. सो यू आर सपोज टू लर्न दैट, यू आर सपोज टू रिवाइज इट बिकॉज़ उसका क्लास 10 में एप्लीकेशन है. आई होप इट्स क्लियर. आई थिंक हमारा सेशन आज कुछ लंबा हो गया. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. प्लीज प्रैक्टिस द सम्स. आप लोगों के पास काफी सारा फ्री टाइम है, यूटिलाइज करिए, कॉन्सेप्ट लर्न कर लीजिए. इट विल हेल्प यू टू गो as faster once we go back to the school. And I hope that I expect others also to join us. because इतना बोलने के बावजूद आई थिंक ओनली 23 स्टूडेंट्स और आई थिंक ये हमारे 10th A के भी बच्चे हैं इसमें एंड माय क्लास आल्सो बट वेरी लेस नंबर. अप टू यू. चलिए उनकी मर्जी की बात है. दोज हु आर प्रेजेंट आई होप दैट यू अंडरस्टैंड एंड यू प्रैक्टिस. क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे देखोगे तब आपको आसान लगेगा, करने के टाइम पर फिर से डिफिकल्ट हो जाता है बच्चा. तो जब तक आप खुद से नहीं करोगे इट वॉन्ट हेल्प यू. ओके, so see you next time.
I'll take a day break and then we'll go a day after tomorrow because I expect कि आपके पास बहुत ज्यादा काम है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा ऑलरेडी कल का भी दिया हुआ है, अभी डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल का भी मैं आज दूंगी, तो आपके पास काम ढेर सारा है. So I'm giving you tomorrow's date today evening and tomorrow. I think 1.5 day. Go through it. We'll meet day after tomorrow. Okay? I'll pass on the schedule to you. Okay. Thank you.